Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being a Sunday, we'll also be taking calls from your listeners on mutual fund and related issues. You can call us on our direct numbers 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. Our numbers once again are 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. And please dial 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आते खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में सीधे शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Prime Minister Narendra Modi says a new India will be more prosperous when our farmers are empowered. Startup ecosystem continues to grow in the country with the creation of 14 new unicorns in the first 3 months of 2022, and Brent crude oil futures fall for the second straight week to end the week at $102.78 a barrel. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब किसान मजबूत होंगे तो देश में समृद्धि आएगी। इस वर्ष के पहले 3 महीनों में 14 नए यूनिकॉर्न के साथ देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम में तेजी से विकास हो रहा है और कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। सप्ताह के अंत में कच्चे तेल का मूल्य $102.78 प्रति बैरल दर्ज किया गया। और आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं से देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत मिल रही है। श्री मोदी ने कहा कि जब किसान मजबूत होते हैं तो देश समृद्ध होता है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि देश को अपने किसानों पर गर्व है और जब हमारे किसान सशक्त होंगे तो देश और अधिक समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के पात्र परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में यह राशि अंतरित की जाती है। लाभार्थियों के बैंक खातों में यह राशि सीधे भेजी जाती है। अब तक 11 करोड़ 30 लाख से अधिक किसानों के परिवारों को 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। And now we're joined by first caller of the evening, Bibi Narula from Gurugram. A warm welcome to you on the program. Please ask your question to our expert, Dhirendra Kumar. Narula ji, you are online. Do ask your question. Yeah, actually I'm a senior citizen and I'm looking for a regular income, monthly income. And last time also I raised this question. And now my question is that I want to invest in a mutual fund, either an option of dividend plan or an option of systematic withdrawal plan. Now, which would be better from taxation point of view? Dividend, one is the taxation part. The other is, fulfilling your needs better. Dividend, when you get it in the form of a dividend, it will be treated as your income. Whereas when you do a periodic withdrawal by way of systematic withdrawal plan, the tax, it actually amounts to a great tax deferral, because after you make an investment and the periodic withdrawal in the initial years, a substantial part of your withdrawal is by way of getting your capital back. It is not a gain. So effectively a very small component of your withdrawal is taxable. So from a taxation point of view, systematic withdrawal plan is more tax efficient. The other thing is, dividend you will get it only at the time of, when the fund company chooses to give you a dividend. Whereas a systematic withdrawal plan could be dependent on your needs.
You want it quarterly, you want it monthly, how much do you want it? Be conservative with your withdrawal, otherwise you run the risk of eating your capital. But specific timing of withdrawal is what you can plan with a systematic withdrawal plan. Dividend will be entirely dependent on, it will be at the mercy of fund company and its performance. Dhirendra, there has been news about banks partnering with asset management companies and insurance subsidiaries. What are the mutual fund schemes offered under such a partnership, and how beneficial is it to the buyers of this product? So mutual fund banks have always been, distributing mutual funds, and they have been doing it for a long time. There is nothing new about it, and there is no special advantage. In fact, for banks, it is mandatory to be doing a third-party distribution, and many a times, they choose to, the bigger banks, the leading private sector banks, they tend to prefer their own fund company, but by law they are supposed to be, keeping an arm's length and be objective in selling the fund that they do. And so in that sense, there is nothing new and there is nothing special right now. And for the benefit of our listeners, what is the type of mutual fund scheme that ideally a typical person should go in for from medium to long term? This is entirely a function of three things. One is the medium term. I would say define the time frame. Say 2 to 5 years. One should be very conservative. If you are, it also depends on how negotiable your goal is. If it is not a negotiable goal, then you have to be entirely into fixed income. And if it is a little negotiable, maybe one should consider the hybrid plans with little bit of equity allocation, where you run the possibility of beating inflation. As inflation going up, you have to work hard towards beating it. And the only way, methodical way about it is to add some equity component in a methodical way. And so that's the way to go about it. Long-term allocation depends. If you are investing in mutual fund for the first time, choose an aggressive hybrid fund. If you are going to, if your investment will also get you a tax benefit, then maybe start with a tax-saving fund. Never invest lump sum. So if you follow these 2-3 rules, this is the way to go. If you have gotten used to the ups and downs of the market in a little bit, in a modest way, if you have invested some time and you have acclimatized yourself with the ups and downs of the market, maybe flexi cap fund or a large and mid cap fund will get you a broad exposure of the market. I would say that most investors should keep it very simple. They should not try and complicate this. Though there are 30-35 kind of funds, but most individual investors' need can be fulfilled by just having keeping a focus on 3-4 kind of funds. What about mid-cap mutual funds, which are basically equity-based? Yeah, mid-cap funds they invest in mid-sized companies, and the promise of mid-cap is that they turn out to be a good fund, turns out to be more rewarding. But the downside is that for most new investors, or even an investor who is used to the equity market, on the downside they actually fall very freely, and that scares any investor unless you get seasoned, unless you get used to, or you have been through a cycle whereby you understand the rewards and you build a tolerance for that. So mid-cap, small caps, and many other categories which are exotic, and they could prove to be more rewarding. But when the market falls, I'll just give you one number. 2008, we saw the market went into a tailspin, and the mid-cap and the small-cap fund actually went down by about 60% and 75% respectively. That was a huge fall. Your 100 rupee becoming 60, or 40, or your 100 rupee becoming 25, and that is something which most investors don't get used to. They are scared so much after this experience that they get out and never to come back again. So that's why these are the kind of funds which are not meant for anybody who has started investing in equity in recent years.
और इस बीच खजुराहो से हमारे श्रोता जितेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। जितेंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी नमस्ते सर। जी सवाल पूछिए। सर ये पूछना चाहता था कि जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से जो हम इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, तो उसमें चार्ज क्या देना पड़ता है? म्यूचुअल फंड वालों को चार्ज कितना देना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। म्यूचुअल फंड में आपको दो तरीके का चार्ज लगता है। दो तरीके का प्राइसिंग होता है, और ये आपको सीधे तौर पर नहीं देता है। तो 100 रुपया अपना लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी उसमें से 1 रुपये 1.5 रुपया के पैसे में से ही काट लेती है। ये आपको सीधे तौर पे आपको उसके लिए अलग से पैसा नहीं देना पड़ता है। और ये दो तरीके का चार्ज इसलिए होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का दो तरीका है। एक तो आप सीधे लगाए बिना किसी की मदद लिए बिना, उसके खर्चे कम है। अगर आप किसी की मदद लेते हैं, अगर कोई इंटरमीडिएट कोई म्यूचुअल फंड एजेंट आपकी मदद करता है और वो जब पैसा लगाते हैं तो उन फंड के एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। तो ये जो एक्सपेंस का रेंज है ये करीब 0.75% से लेकर के ये 1.5-2% तक जा सकता है। और ये निर्भर करता है कि जैसे जैसे फंड बड़े होते जाते हैं इनका खर्चा कम होता जाता है। लेकिन ये डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के खर्चे जो है वो हमेशा ही थोड़े रेगुलर प्लान के खर्चे थोड़ा ज्यादा होते हैं। तो म्यूचुअल फंड का खर्चा आपको सीधा नहीं लगता है, इसका खर्चा आधे प्रतिशत से 2% तक हो सकता है। ये पैसा आपके इन्वेस्टमेंट में से ही रोज ये कट जाता है और सालाना खर्चा इसका इतना बैठता है। So speaking of charges, Dhirendra, you have the entry load, you have the exit load. How does a prospective customer actually invest in a scheme looking at not only the load charges, entry and exit, but also the capital gains tax benefit short term, long term? So those are two different things. One is that entry load on mutual fund was abolished about 7-8 years back. So investors don't pay entry load. There is something called exit load, but that is also a contingent deferred sales charge. Because most exit loads are designed in such a manner that if you invest and take your money out before 1 year or 2 years, you will be levied that charge. And if you hold on for that period, that is a load to discourage short-term investment. So the exit load is something which you can avoid by choosing the appropriate kind of fund with the appropriate investment time frame in mind. So one can, if you are investing carefully, then one can safely ignore the exit load and entry load is abolished. Coming to the short-term capital gains and long-term capital gains tax, there is these are tax levied on on gains, and from taxation point of view, any investment which you redeem before 1 year, and if there is any gain, any investment which you realize, any equity in mutual fund investment that you make, you realize the gains before 1 year. There is a 15% short-term capital gains tax on that capital gain. Holding for 1 year and more, it is 10%. In case of debt fund, the capital gains tax are different. For investment of less than 3 years, all the income, all the gains is added to your income, and you are taxed at your marginal rate, whether you fall into 5%, 10%, 20%, 30%, depending on your total income. If you hold it for 3 years and more, then the capital gains tax is levied, and that is after indexation. 20% capital gains tax after indexation on all your debt fund investments. From taxation point of view, debt funds are defined as all investments, all mutual funds, which are not invested over 65% into equity or debt funds. और गाजियाबाद से हमारे श्रोता गौरव लाइन पे हैं। गौरव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार गिरन जी। सर ये आपने कहा था लॉन्ग टर्म में इक्विटी जो है इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट करता है, ये जरूर करता है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, लेकिन टेक्निकली समझना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन को ये बीट क्यों करता है। क्या इक्विटी, ऑफकोर्स हम अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसके लिए म्यूचुअल फंड चुनते हैं, इसी वजह से वो बीट करता है, पर क्यों करता है, ये पहला सवाल है। दूसरा, इन्फ्लेशन अगर बहुत तेज होता है तो उसका हमारा इक्विटी पे क्या असर आएगा? क्या इक्विटी भी उसी तेज से भागेगी जितने तेज से इन्फ्लेशन चलेगा, कीमतें बढ़ेंगी? उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। थैंक यू। इक्विटी इन्फ्लेशन को इसलिए बीट कर पाता है क्योंकि
इसके पीछे आम धारणा ये है कि आप जब इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो इनडायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं और म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ में शेयर खरीदता है, तो आप कंपनी के आप बेनिफिशियल इंटरेस्ट आप होल्ड करते हैं। अधिकतर कंपनियां इक्विटी इन्फ्लेशन को इसलिए बीट कर पाती हैं क्योंकि महंगाई, अगर अच्छी कंपनी है तो बढ़ती महंगाई दर उनके इनपुट कॉस्ट में जो महंगाई बढ़ती है वो अपने कस्टमर को पास ऑन कर पाती हैं। आप देखें, आप जो भी खरीदते हैं और कंपनियां मुनाफा कमाती हैं उस बढ़ते महंगाई को पास ऑन करने के बावजूद। तो ये उम्मीद की जाती है, और ये ऐसा संभव नहीं, ऐसा हो सकता है कि ये लगातार नहीं होता हो, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि 2-3 साल में अच्छी कंपनियां अगर कॉम्पिटिटिव रहती हैं तो जो बढ़ती, अगर कंपनियों पे भी असर होता है महंगाई दर का, उनके भी बहुत सारे इनपुट कॉस्ट बढ़ते हैं, उनके भी लोगों के खर्चे बढ़ते हैं, उनका भी तनख्वाह बढ़ता है, और अगर कंपनी अच्छी है तो ये उनके सामान के दाम में वो रिफ्लेक्ट होगा और वो एक तरह से कस्टमर को पास ऑन किया जाएगा। तो यही इसका आधार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर 6 महीने पे जो दाम बढ़ेगा वो बढ़ जाएगा। कंपनियां अपने हिसाब से अपनी स्थिति को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए, कितना ड्यूरेबल ये महंगाई है, क्या वो और कितना इलास्टिक बाजार है या कंज्यूमर का रुख है, जो कुछ भी वो कंपनी बनाती है इस पर निर्भर करता है। लेकिन 2-3 साल में अगर कंपनी महंगाई को बीट नहीं करती है, अगर वो कस्टमर को नहीं पास ऑन करती है, तो कंपनी नुकसान में चली जाएगी। यही प्रमुख कारण है और कि कंपनियां इक्विटी इन्फ्लेशन को बीट कर पाती है। नेक्स्ट कॉलर इज हरीश फ्रॉम फरीदाबाद। हरीश जी, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन द प्रोग्राम। सवाल पूछिए सर। हरीश जी, आर यू ऑनलाइन? यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो जी, सवाल पूछिए सर। हाँ सर, एक्चुअली मैंने नैस्डैक फंड लिया था, आपने सजेशन दिया था उस समय, तो फिर मैंने नैस्डैक फंड तो ले लिया, लेकिन उसकी एसआईपी तो बंद हो गई। अब मुझे ये पूछना है कि सर इस जो अमाउंट मेरा पड़ा हुआ है उसको रहने दूं या अभी एसआईपी चलने का कोई टाइम है? और दूसरा सर, मेरा क्वेरी है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड और एसबीआई का ब्लू चिप फंड, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा सर? ये जो नैस्डैक का फंड बंद हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो विदेशी निवेश का जो सीमा था फंड के लिए, वो म्यूचुअल फंड वो उस लिमिट को हिट कर दिया है, और ये सीमा जो विदेशी बाजार में भारतीय फंड के लगाने का है ये आरबीआई निर्धारित करती है। तो उम्मीद है कि ये बढ़ जाएगा, लेकिन फिलहाल तो अभी नहीं बढ़ा है और थोड़ा समय भी हो गया है। नैस्डैक फंड में जो आपका पैसा लगा हुआ है उसको निकालने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अभी भी ये बड़ा प्रॉमिसिंग फंड है, नया पैसा नहीं लगाया जा सकता है उस फंड में, लेकिन दूसरे नैस्डैक फंड है जिनमें कि आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक टेक्निकल ग्लिच है। जो मोतीलाल ओसवाल का जो नैस्डैक फंड है वो अपना ईटीएफ खुद चलाता था, और ये नैस्डैक फंड और वो ईटीएफ भी चलाता था और वो एक फंड भी चलाता था। क्योंकि वो उस फंड में पैसा लगाना उस फंड के लिए मुश्किल हो गया, वो लिमिट हिट कर चुका है। लेकिन अभी भी भारतीय फंड के लिए एक अलग सीमा बनी हुई है, एक अलग एलोकेशन बना हुआ है, जिसमें कि ईटीएफ में भारतीय फंड के लिए जिसके तहत वो अभी सीलिंग नहीं पूरा हुआ है। उस वजह से कोटक का जो नैस्डैक 100 है उसमें पैसा लगाना अभी भी संभव है, वो खुला हुआ है, और ये फंड सीधा एक ईटीएफ में पैसा लगाती है, और उसमें अभी भी विंडो है पैसा लगाने का, और उस ईटीएफ में पैसा लगाने वाला एक फंड ऑफ फंड भी कोटक का है, जिसमें अभी निवेश जारी है। We'll be heading for a short commercial break. We'll be back with more on Market Mantra. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242।
Welcome back to Market Mantra. And today's program is focused on taking mutual fund and related issues, queries on that. Now we're joined by Murli from Delhi. Murli, a warm welcome to you on the program. Please ask your question. Yeah, good evening. This is regarding this direct plan and the regular plan. The difference is the commission paid to the distributor. Is this commission paid every year or it's just the first time when we buy the mutual fund? This is the one confusion. Yeah. The commission is paid based on your investment on a pro rata basis, normally every quarter, and it is not upfront. In fact, some fund company, when they, upfront commission is strongly discouraged and prohibited by the regulator. It creates a kind of disconnect between, between the sales practices or the incentivization, which is not aligned with the investor's interest completely. So it is, and the commission which is paid out of the expense ratio levied by which is charged by the fund company. So it is normally paid, and which is deducted from the NAV on a day-to-day basis. So you will be witnessing the expense ratio, which is reported periodically by the fund company. That is the expense ratio charged on an annual basis. But these are deducted on a daily basis, and the commissions are typically paid on a quarterly basis to the mutual fund agent or the distributor every quarter. और मुंबई से हमारे श्रोता रमेश लाइन पे हैं। रमेश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। जो आदित्य बिरला मनी मैनेजर है और ये टाटा मनी मार्केट फंड, इनमें कौन सा बेटर है, और या तो इसी कैटेगरी में कोई और इससे बेटर है क्या? मैं आपकी प्रश्न नहीं सुन पा रहा हूँ। नहीं, आदित्य बिरला मनी मैनेजर फंड या टाटा मनी मार्केट फंड, इज इट क्लियर सर? हाँ, इट्स बेटर नाउ, यस। या इनमें से कौन सा बेटर है, या इस कैटेगरी में और कोई फंड है जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म विथ आप लोगों को इनकी आवाज आ रही है? जी आ रही, धीरेन जी जा रही जी। आप मुझे इनका प्रश्न जरूर दोहराएं। Let me redirect the question on behalf of our listener who has actually repeated the question twice, but because of transmission difficulties has not been able to make it clear. One is Aditya Birla Money Manager Fund and the other is the Tata Money Market Fund. This is for long-term investment. He's asking about the credibility of these funds, sir. These two fund companies have actually struggled in managing their, they have been little disappointing with the fixed income fund. And these are debt funds. These are not vehicle of long-term, these are not long-term growth in vehicles anyway for an individual investor. Well, before we take on our next caller, let's have a look at our second and third headline stories of this program. Startup ecosystem continues to grow in the country and it has now created as many as 14 unicorns in the first 3 months of 2022. This is the third consecutive quarter when startups have received over $10 billion across 334 funding deals, says an industry report. With the creation of these 14 new unicorns, the overall tally of startups with over $1 billion valuation in the country rises to 84 now, according to a PwC India report. According to the agency, the quarter saw the maximum fund flowing into software as a services companies, grossing more than $3.5 billion. Let's have a look at the latest from the oil market. Global crude oil prices declined for the second straight week after countries announced plans to release crude from their strategic stocks. So Brent crude futures ended the week at $102.78 a barrel, dropping 1.5% during the week. U.S. crude futures slipped by 1% during the week to close at $98.26 a barrel. Dhirendra, we have a question from our caller, but it is in written form, in the form of an SMS, and the question is regarding mid-cap funds. He is inquiring about Kotak Emerging Equity Fund and the Nippon India Growth Fund. What's the
prospect of these two? The mid-cap fund, and they Kotak Emerging Equity Fund has had a very strong history, and I'm hopeful that for any time investment of 5 years and more, it should turn out to be reasonable. The other one, erstwhile Reliance, now Nippon, is also an okay fund, but I haven't taken a very close look at this fund of late. और दिल्ली से हमारे श्रोता सुरेश लाइन पे हैं। सुरेश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। धीरेन्द्र जी को मेरा नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और मेरा एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड अभी अप्रैल में मैच्योर हो रहा है, तो क्या आप मुझे एडवाइस करेंगे कि उसका पैसा निकालकर म्यूचुअल फंड में डालने के लिए, या मैं उसी को एक्सटेंड करूँ अनदर 5 years के लिए? मुझे अभी 4-5 साल जरूरत नहीं है पैसे। अगर आपके पास पहला फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आपके पास दूसरी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है और इस पैसे की और आपके पास और कोई फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मेरी सलाह हमेशा होती है कि पीपीएफ में इकट्ठा हुआ पैसा जब तक आपको अगर आपके पास अगर कुछ भी हो, कोई भी और डिपॉजिट नहीं हो या कुछ और नहीं हो तो चलता है, लेकिन पीपीएफ से मिलने वाला जो ब्याज है वो टैक्स फ्री एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अगर आपके पास कोई और फिक्स डिपॉजिट और कोई और फिक्स्ड इनकम, और हर एक आदमी के किसी भी व्यक्ति के अपने ओवरऑल प्लान में फिक्स्ड इनकम होना बड़ा जरूरी है। ये आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है, आप बड़े निश्चिंत रहते हैं और इससे ज्यादा सुरक्षित और खासकर इससे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरह टैक्स फ्री होना, इसका एक बड़ा स्पेशल एडवांटेज है। तो अगर आप फिक्स्ड इनकम एलोकेशन किसी भी व्यक्ति को अपना पीपीएफ रिटेन करना चाहिए। अगर आपके पास कोई और इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तब जरूर पीपीएफ से थोड़ा पैसा निकाल के इक्विटी में लगना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिटर्न पीपीएफ की तुलना में इक्विटी में बेहतर होगा। Dhirendra, regarding the equity-based mutual funds, what is the criteria for a typical investor? They look at obviously the return, but what about the NAV of each unit, including the fund size? Are these some of the criteria that a typical investor should look at? No, investors should completely ignore the level of NAV. Whether it is 10 rupee, whether it is 50 rupee, or whether it is 5,000 rupee, it doesn't matter, because it is a function of time. And if you are going to invest 1,000 rupee in a 10 rupee NAV fund, or a 50 rupee NAV fund, or a 1,000 rupee NAV fund, and if all the three funds do exactly just as good, then your 100 rupee or 1,000 rupee will grow exactly as much. It doesn't matter. So level of NAV doesn't matter. Size of a fund matters. And size of a fund is actually, big funds are good in some cases, big funds are bad in some cases. If you are investing in a small cap fund, mid cap fund, or a flexi cap fund, very big funds are disadvantageous. If you are investing in an index fund, if you are investing in a liquid fund, if you are investing in a money market fund, all the kind of commoditized fund where the scale or economies of scale translates into an advantage, then, big is good. So, big and small is a function of, the kind of fund that you're investing. जी, धीरेन्द्र जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका। And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi says New India will be more prosperous when our farmers are empowered. Startup ecosystem continues to grow in the country with the creation of 14 new unicorns in the first 3 months of 2022. And Brent crude oil futures fall for the second straight week to end the week at $102.78 a barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.